बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग की तरफ। इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट of some stroke of fortune, but almost always his sense of value is changed. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड इज डोम्ड, तबाहाल, बदनसीब, अनलकी, स्ट्रोक, ज़रब, चोट, ब्लो और यू कैन से स्मैक, एप्रिशिएटिव, दाद, कदरदानी, वैल्यू और यू कैन से एडमायर, परमानेंट, मुस्तकिल, एटर्नल और यू कैन से अनएंडिंग, स्पिरिचुअल, रूहानी, सैक्रेड, डिवोशनल और यू कैन से डिवाइन, मैलो, मुलायम, नरम दिल, सॉफ्ट, जूसी और यू कैन से राइप, शैडो, साया, डस्क, डार्कनेस, फॉर्चून, किस्मत, लक, वर्थ और एसेट्स। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लाइन है, इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो, कहानियों में बदनसीब हीरो, इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट, जो बिल अमूम आखिरी लम्हे बच जाता है, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, किस्मत के थपेड़ों की वजह से, यानी किस्मत की वजह से बाज़ औक़ात आपने देखा कि कुछ हीरो आखिरी वक़्त पर जाकर बच जाते हैं। लेकिन कहती है कि बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज चेंज, लेकिन तकरीबन उसका एहसास इक़दार हमेशा बदल जाता है। यानी कि वो बच तो जाता है लेकिन उसकी सेंस ऑफ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में बदनसीब हीरो जो बिल अमूम आखिरी लम्हे बाज़ुकात किस्मत के थपेड़ों की वजह से बच जाता है, लेकिन तकरीबन उसका एहसास इक़दार हमेशा बदल जाता है। The next line is, he becomes more appreciative, वो ज़्यादा कदरदान बन जाता है। किस चीज़ का? ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ज़िंदगी के मानी और इसके मुस्तकिल रूहानी अक़दार का। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values, वो ज़िंदगी के मानी और इसकी मुस्तकिल रूहानी अक़दार का ज़्यादा कदरदान बन जाता है। It has often been noted that those, अक्सर देखा गया है कि जो लोग who live or have lived, जो लोग रहते हैं या रह चुके हैं, in the shadow of death, मौत के साए में, bring a mellow sweetness to everything they do, वो हर काम सर अंजाम देने में एक हल्की सी मिठास ले आते हैं। It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. अक्सर देखा गया है कि जो लोग मौत के साए में रहते हैं या रह चुके हैं, वो हर काम सर अंजाम देने में एक हल्की सी मिठास ले आते हैं, यानी कि अपने काम के अंदर परफेक्शन ले आते हैं, अच्छाई ले आते हैं, खूबसूरती ले आते हैं। तो पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. So simple English है, we often find in the stories that the accursed hero is usually saved at the last moment by some lucky incident. However, such an incident often makes the hero change
his feelings of assessment. The next line is, he becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. Then he begins to understand better the work of life and its lasting sacred values. The next line is, it has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. So simple English, it has been observed that the people who have faced or seen death closely often becomes very kind and warm-hearted. They show this sweetness in all their doings. So dear students, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है.